So, starting. Yeah, sure. Hi everyone, this is Soumya from DASF, your host for today, and we are back with yet another very interesting and important session on life of animals during the pandemic situation. So we have with us our guest, Mr. Robin Singh, who is the co-founder of Peepal Farm. Hi, sir. Hi, Starting his Soumya. career Starting his career as an ethical hacker in 1997, Sir founded Ejunkie in 2003. After successfully exiting in 2011 and doing couple years of soul searching, Sir started working to help animals in February 2013. This eventually led him to work for animals and started People Farm to place for animals to heal and to be heard. In December 2014, along with two other co-founders, they've been building it, running it, and living in there. We welcome you, sir. How are you doing? Good. Thanks for having me, and thanks for a very nice introduction. Thank you. So, before we begin with our session, I would like to introduce DSF to you and also to the viewers who have connected with us for the first time. So, sir, may I proceed? जी, बिल्कुल बताइए. Okay. Donate a Smile Foundation was founded on 5th December 2016. It is a result based organization which is working on education, youth skill development, health, environment, and women empowerment. From the past few years, we are working with different government agencies like MP Police, Forest Department, Mahila Bal Vikas, and various NGOs. Recently, we have completed a student police cadet project with Shivpuri Police, which is selected as the best project at the divisional level. Presently, we've completed live webinar series in which 40 plus speakers have joined us from different fields like education, sports, skill, music, history, and fashion designing. Now, I would like Prabal to show us some pictures of your user. Of me. Oh, that's a Yes, surprise. sir. Okay. Of you and the farm. Yeah. जब तक pictures load हो रही हैं, we can ask if people have any questions, है ना? Yeah. Seems like they're Yeah. loading So, and a bit blurry. So, yeah. Yeah. Right. So, sir, my first question to you is please tell us about what is People Farm and also what inspired you to think about such an initiative. okay. And is it okay if I answer in Hindi? Will your audience understand? All of the Yeah, people, they understand Hindi? yeah, sure, sir. Your call. ठीक है. तो पीपल फार्म से पहले ना हम सबसे पहले तो हमने इंडिया में जब जानवरों के साथ काम करना शुरू किया, मतलब हम काम तो इंसानों के साथ कर रहे थे पर जानवरों के लिए, तो हमने ऑरोविल से शुरू किया. उसके बाद हमने दिल्ली में स्ट्रे डॉग स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम चलाया. तो जब हम वो चला रहे थे तो हमें ये लगा कि भाई हम एक दो डॉग्स की हेल्प करते हैं. जब हम एक डॉग की हेल्प करना चाहते हैं तो उसके रास्ते में 40 तो मुर्गियों की दुकानें आती हैं. वहां पे वो 40 की 40 दुकानों में 50 मुर्गियां एक एक पे कटती है, तो 2000 मुर्गी तो हम एक डॉग को लेने जाते हैं इतने में.
कट जाती है। तो हमें लगा कि भाई कुछ काम हम ऐसा करें कि जिससे ना सिर्फ ये एक एक इंडिविजुअल एनिमल की हेल्प हो, पर ये जो सोर्स ऑफ एनिमल सफरिंग है इस पे भी थोड़ा फर्क पड़े। और वो तभी हो सकता है जब लोग जानवरों के दर्द के साथ जुड़े। देखिए ऐसा कोई भी नहीं चाहता, मैं कहता हूँ कि बड़े मीट खाने वाले लोग भी कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई मैं चाहता हूँ कि जानवर को आप टॉर्चर कर दें। तो बस यही है कि लोग भूले होते हैं कि यार जानवर को दर्द होता है, हमारा हमको लगा कि हमें याद दिलाना चाहिए। तो पीपल फार्म हमने शुरू किया दिसंबर 2014 में with the dream कि it will be a place for animals to heal and be heard। तो उससे पहले लगभग 3 एक साल पहले उससे मेरा एक सपना था कि भाई जब मैं इंडिया वापस आया था तो मुझे लगा था कि शहर में नहीं रहूंगा, ठीक है अमेरिका से इंडिया आ गया लेकिन मैं ये दिल्ली में धक्के नहीं खा रहा मैं, तो गांव में कहीं पे घर बनाऊंगा। तो पैसे जोड़ रखे थे, तो वो जो ड्रीम था कि गांव में कभी घर बनाएंगे और पीपल फार्म वो कोइंसाइड कर गया। तो रादर देन की एक फार्म हाउस बनाते जहां पे हम ठाठ से रहते, तो ये था कि इसको इस तरह बनाते हैं कि इसमें मास्टर बेडरूम वगैरह की जगह काउ शेड हो, स्विमिंग पूल की जगह क्लिनिक रहे, हमारा कोई एंटरटेनमेंट रूम हो उसकी बजाय वॉलेंटियर्स के लिए जगह हो। तो इस तरह पीपल फार्म की शुरुआत हुई। और अब होते होते अब पीपल फार्म में ना सिर्फ हम एनिमल रेस्क्यू करते हैं, ना सिर्फ हम अपना खाना उगाते हैं, बल्कि हम कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जिससे हम लोकल विमेन को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और साथ ही साथ वी डू अ लॉट ऑफ स्टोरी टेलिंग, जो आपने शायद फेसबुक पे देखा होगा, उसी माध्यम से आपको हमारे बारे में पता लगा होगा। तो ये हम कर रहे हैं। राइट सर। सर सो आपने स्टेरिलाइजेशन की बात करी सर, सो व्हाई डू यू प्रमोट स्टेरिलाइजेशन? लाइक हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें कि आप न्यूटरिंग ऑफ एनिमल्स और स्टेरिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सो व्हाट गुड डज इट डू? देखिए कि अब हालात ऐसे हैं कि जब सड़क पे बच्चे पैदा होते हैं किसी कुत्ते के, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल बहुत कम रहती है। मतलब आपका 8 में से शायद एक आध कोई बचे, और वो जो एक आध बचेगा भी उसकी ऑनेस्टली लाइफ तो कोई खासी अच्छी है नहीं। तो इसी सफरिंग को प्रिएम्प्टिवली खत्म करने के लिए स्टरलाइजेशन की जाती है। आई मीन एक मुद्दा तो ये है कि स्टरलाइज करेंगे तो वो पपीज की सफरिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो पैदा ही नहीं होंगे तो सफर भी नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। सेकंड ये है कि जब फीमेल्स को स्टरलाइज कर दिया वो हीट में आएंगी नहीं, तो जब वो हीट में, क्योंकि जब वो हीट में आती हैं तो आसपास वाले कुत्ते लड़ते हैं, तो वो कुत्ते एक दूसरे को भी इंजर करते हैं, फीमेल को भी इंजर करते हैं। तो वो सारा जो मामला है वो नहीं होता, वो पूरी प्रक्रिया से हम बच जाते हैं। एंड थर्ड जो है, थर्ड इज मोर लाइक अब अभी की पैकेजिंग दिस इन अ वे कि जहां पे सोसाइटी को लगे, क्योंकि देखिए सोसाइटी जो है हमारी बड़ी ह्यूमन सेंट्रिक है, वो जानवरों के बारे में नहीं सोच रही इतना। तो हम स्टरलाइजेशन को एक इस पैकेज में दे सकते हैं कि देखिए हम लोग जो नेबरहुड में कुत्तों को खाना खिलाते हैं वो हम इसलिए खिलाते हैं कि हम कुत्तों से दोस्ती कर पाए, और जब हम दोस्ती करते हैं तो उनको हम स्टरलाइज कर पाएंगे, वैक्सीनेट कर पाएंगे, और उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी। क्योंकि भाई जो बड़े साहब लोग हैं जिन्हें बड़ा होता है कि भाई मेरी BMW पे स्क्रैच आ जाएगा, कुत्ता चढ़ेगा, तो उन लोगों को थोड़ी शांति हो जाएगी, हाँ हाँ भाई ये जो नॉन प्रॉफिट है ये कुत्तों की जनसंख्या कंट्रोल में ला रहा है, तो भाई खिलाने दो इन्हें खाना। तो तीसरा रीजन एक थोड़ा ये भी है, पब्लिक इमेज, पब्लिक परसेप्शन। सर आप अडॉप्शन भी करवाते हैं एनिमल्स का, राइट? तो वो चीज क्यों प्रमोट करते हैं? मतलब व्यूअर्स जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ब्रांडेड डॉग लें या फिर ऐसे, तो व्हाई डू यू प्रमोट अडॉप्शन एंड उसके क्या फायदे हैं? देखिए आप दो मुद्दों को थोड़ा सा शायद ना आपने एक में कंबाइन कर दिया, क्योंकि डॉग, ब्रीड डॉग खरीदना अलग बात है और अडॉप्शन एक अलग बात है। पर अडॉप्शन का मतलब ये नहीं है कि अडॉप्शन और ब्रीड डॉग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आप एक ब्रीड डॉग भी अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब कायदे से अगर आप ब्रीड डॉग को प्रेफर करते हैं स्ट्रे डॉग के ऊपर, तो थोड़ा तो मेरे मन में
उन लोगों के प्रति इज्जत कम हो जाती है, क्योंकि भाई आखिरकार वो लुक्स के अनुसार चुन रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ी सुपरफिशियल बात है, हार्ड टू रिस्पेक्ट दैट। अब भाई किसी को बुरा लगता है तो लगे, ठीक है। तो हम इसलिए कहते हैं अडॉप्शन, क्योंकि आप देखिए ना, एक बड़ी सिंपल सी बात है, लोग बड़े एनवायरमेंट फ्रेंडली बनते हैं, बियर बॉटल रिसाइकिल करते हैं। अरे अब दिल्ली दिल्ली में 1 मिलियन स्ट्रे डॉग्स हैं लगभग, जो मेरे ख्याल से अभी 2-3 साल पुराना आंकड़ा है। तो 10 लाख कुत्ते सड़क पे हैं, आपको वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि लो भैया मैं तो बड़ा डॉग लवर हूं, और आप किसी ब्रीडर को पैसे दे रहे हैं ताकि वो एक किसी बेचारी फीमेल डॉग के साथ बलात्कार करवाता है, बच्चे पैदा करता है, बेचता है, एंड आप वहां से लाते हैं और आप अपने आप को बड़ा डॉग लवर समझते हैं, और साथ ही में उसी टाइम पे शायद पता नहीं कितने कुत्ते गाड़ियों के नीचे आके सड़क पे मर जाते हैं। तो हम लोगों में अवेयरनेस लाते हैं। ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल उज्जड़ हैं, जस्ट उन्होंने अभी सोचा नहीं है, वो अवेयर नहीं है। तो एक बार वो इस बारे में सोचते हैं तो उन्हें हाँ बात में दम लगता है कि हाँ यार ये हम क्या कर रहे हैं, जब ये कुत्ते हम सड़क से ला सकते हैं तो हम क्यों खरीदें। बाकी आपने कहा एनिमल अडॉप्शन, में आपको थोड़ा बता दूं कि अडॉप्शन में देखिए सिर्फ ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ही आते हैं, वाइल्ड एनिमल्स तो वाइल्ड में ही रिलीज करने पड़ते हैं। जैसे कोई बंदर वगैरह हम अडॉप्ट नहीं करा सकते। तो डॉग हो गए आपके, कैट हो गए, ये अडॉप्ट होते हैं। बाकी रही घोड़े भी अडॉप्ट हो जाते हैं, पर जो गाय है, गाय अडॉप्ट नहीं होगी, क्योंकि गाय लोग तभी चाहेंगे जब वो भाई उससे दूध ले सकें। और जो सड़क पे गाय आती है वो वही होती है जिसका लोग दूध ले लेके उसको छोड़ चुके होते हैं, तो उसमें बेचारी में कुछ बचा नहीं होता, इसीलिए वो सड़क पे होती है। तो उसको तो भाई ठीक होने के बाद कोई अडॉप्ट करेगा नहीं, क्योंकि आदमी को फायदा उससे है नहीं। ओके सर, तो आप लाइक अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए हाउ डू यू रेज फंड, लाइक क्या और करते हैं साथ में, सो दैट लाइक हमें एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में देखा था, तो उसका सारा फंड कहाँ से आता है लाइक? सॉरी, एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम, मैं तो नहीं, मुझे नहीं पता, सॉरी। व्हाट डू यू मीन एनिमल एक्सचेंज? समथिंग एक तो वर्क वर्क एक्सचेंज प्रोग्राम है, लाइक यू वॉलंटियर्स वर्क या एक्सचेंज। ओके ओके। मुझे लगा भाई हो सकता है कि इन लोगों ने कुछ शुरू कर दिया हो, मुझे पता ना हो, बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं। तो अच्छा, हमारा जो फंडिंग के माध्यम है वो ये है, एक तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ठीक है। तो हमारे सारे होममेड प्रोडक्ट्स हैं, मैंने आपको बताया कि जो शिवानी है, हम 3 को फाउंडर हैं, मैं हूँ, शिवानी है और जो है। तो जो हम प्रोडक्ट्स यहाँ बनाते हैं उसको हम लोकली भी बेचते हैं, अमेजोन पे भी बेचते हैं, अपनी वेबसाइट के थ्रू भी बेचते हैं। जो सारा प्रॉफिट है वो फिर इस काम के लिए यूज होता है, भाई पेट्रोल का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, एक्सेट्रा। सैलरी इसके लिए हमें एक ग्रांट मिली हुई है एनिमल राइट्स इंटरनेशनल दिल्ली से, एंड उसके अलावा हम एक फार्म से भी चलाते थे, मेरे ख्याल से वो उसको आप रेफर करते थे। तो जैसे जो वॉलंटियर्स आते हैं, या तो वो गांव में अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं, सॉरी एक सेकेंड, yeah, you'll come back in 10. Okay. सॉरी। तो हम जो अपना वॉलेंटियर्स हैं वो या तो गांव में अपना रहने का अरेंजमेंट करते हैं, गांव में कुछ लोगों ने होम स्टेज खोल रखे हैं, या वो फार्म पे रहते हैं, फार्म में हम उनसे रहने खाने का खर्चा लेते हैं। और अगेन वो भी जो सारा है नॉमिनल सा जो अमाउंट है वो अगेन हमारे काम को फंड करता है। इसके अलावा हम डोनेशंस लेते हैं। तो इन तीन चीजें ये हो गई, और चौथा ग्रांट्स मैंने आपको बताया। तो ग्रांट्स, डोनेशंस, प्रोडक्ट्स फार्म से, इसके माध्यम से हमारा सारा काम चलता है। ओके। पर हम लोग इससे कोई सैलरीज नहीं लेते, हमारा अपना जो पर्सनल खर्चा है वो अलग है, जाहिर सी बात है। ओके सर, सो इंडिया में हम जब एनिमल वेलफेयर लॉज की बात करते हैं, सो सर डू यू थिंक उसमें कुछ लूप होल्स हैं जो कि चेंज होने चाहिए, लाइक क्या आपका सोच है उसके बारे में? लूप होल का तो देखिए नहीं पता, मुझे लगता है कि जो लॉज एग्जिस्टिंग हैं
उनकी जो पनिशमेंट है वो थोड़ी ज्यादा सिवियर की जा सकती है, थोड़ी उसमें सख्ती बरती जा सकती है, पर सिर्फ उससे बात बनेगी नहीं। देखिए अब लॉ की जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो पुअर है, क्योंकि अभी भी जो लॉ है वो कहता है कि आपको भाई 50 रुपए का जुर्माना साथ में 3 महीने की जेल हो सकती है, या फलाना करने पे मेरे ख्याल से 6 महीने की जेल भी हो सकती है, और पीसीए के तहत आई थिंक 2 साल तक की भी जेल हो सकती है, पर मुझे लगता नहीं कि किसी को होती है। तो थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन पहले बेटर है, लेजिस्लेटिव तो बाद में भी yes, होता रहेगा, क्योंकि लॉ तो बना हुआ है जो बना हुआ है। जैसे अब आप खच्चर वगैरह को जहां तक मुझे पता है ओवरलोड नहीं कर सकते, पर लोग करते हैं। तो पुलिस अगर ज्यादा ट्रेंड हो, पब्लिक ज्यादा सक्रिय हो, तो डेफिनेटली चेंज लाया जा सकता है। अगर हम सीधा लॉ पे डाल दें तो ये तो काइंड ऑफ वो वाली बात हो जाएगी कि भाई हमारे हाथ में तो देखिए कुछ है नहीं, लॉ ही कमजोर है। लॉ है, उसे इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा, थोड़ा yes. दबाव डालें पुलिस पे। Yeah, but I think सर सर कि कॉम्पनसेशन जो है वो बहुत कम रहता है, बिकॉज लाइक बहुत बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनके कॉम्पनसेशन बहुत ही मिनिमल है, लाइक एनीबडी कैन अफोर्ड, तो वो हिचकते नहीं है लोग वो उसको वो करने से, लाइक ऑफेंस। बिल्कुल बिल्कुल, पर आप कोई एक बंदा तो दिखाइए जिसको 50 रुपए का जुर्माना हुआ हो कुत्ता मारने पे, तो हम कहें ना कि हाँ भाई हाँ वो अरे इसकी 1 लाख, राइट। आप 50 रुपए वाला तो कोई दिखाइए, मेरे को तो वो ही नहीं मिला अभी तक। तो अगर वो 50 की जगह लाख भी होता तो क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। आप देखो ना, अब आपको राइट क्या लगता है, राइट लेकिन रेप को लेके 7 साल की सजा है, दिल्ली में रुक गए क्या? नहीं, राइट। पुलिस निकम्मी है दिल्ली की तो खासकर। और क्योंकि हम तो यहाँ छोटे एरिया में रहते हैं, यहाँ पुलिस जो है ज्यादा सक्रिय है, हर कोई हर किसी को जानता है, तो सब थोड़ा सेफ है। ऐसा नहीं कि पुलिस आपकी बात सुनेगी नहीं, पर बड़े शहरों में ये ज्यादा दिक्कत है, तो ही तो दिल्ली में लड़कियां इतना अनसेफ फील करती हैं। आप लोग कहाँ पे हैं? सर मैं कानपुर से हूँ, बाकी प्रबल थे, रिया मैम थे, ये लोग शिवपुरी के हैं सर, एमपी। अच्छा, नहीं तो अभी आप, अच्छा आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड टीम है? यस, मैं ओके। इंडिविजुअली कानपुर से हूँ। तो अच्छा एक बात मैं और जोड़ना, सॉरी, ओह फोटोज आ गई, अब इन्हें बंद ही कर दें क्योंकि हम बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, या अच्छा। तो एक बात जो मैं आपसे, लॉ की जब आपने बात कही, देखिए लॉ जो है सिर्फ अ, सिर्फ एनिमल सेंट्रिक नहीं होने चाहिए, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको लेके भी लॉज जो है वो ठीक नहीं है। अब आप बताइए कि आपके एरिया में एक अग्रेसिव डॉग आ जाता है, ठीक है, आपको पता है ये काटता है, जो भी, अब उस बेचारे की क्यों ऐसी हालत हुई इस बारे में हम नहीं कह सकते, मान लीजिए, लेकिन वो रैबिड नहीं है, जस्ट उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम है। अब अमेरिका में तो आप उस डॉग को पकड़ के यूथनाइज कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया में अब जब हमें लोग फोन करते हैं तो हमारे पास कोई चारा नहीं होता, क्योंकि अगर हम उस डॉग को ले आए और यूथनाइज कर दें तो ना सिर्फ एक तो ये जो एनिमल लवर हैं ये हमारे पीछे पड़ जाएंगे कि आपने एक हेल्दी कुत्ते को मार दिया, दूसरा ये कानूनन हम गलत हो जाएंगे क्योंकि आप हेल्दी एनिमल को मार नहीं सकते। तो एक बात चाहिए, पब्लिक के पास फिर क्या समाधान है, ठीक है ना। आपकी आपकी जो कॉलोनी है, आप जहाँ रह रहे हैं, आपका रिहाइश वाला एरिया, वहां एक कुत्ता कटखना है, तो आपको कोई समाधान तो चाहिए, कानून कोई समाधान ही नहीं देता। और समाधान नहीं देता, होता क्या है, वो कुत्ता किसी बच्चे को काटेगा, उसके माँ बाप आक्रोश में आके उन्होंने उस कुत्ते को भी पीट देना है, आसपास के 5 जो नजर आएंगे वो सब सभी कुत्ते फिर पिट पिट के बुरी तरह मरेंगे। तो वो उस लॉ की जरूरत है जहां पे एक अग्रेसिव एनिमल को लीगली वी शुड बी अलाउड टू पुट एन अग्रेसिव एनिमल डाउन, एंड एनिमल लवर्स दे नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई सारे फैसले सिर्फ आपको कैसा महसूस कराते हैं ये सोच के नहीं लिए जाते। यू हैव टू लुक एट द होल सिचुएशन एंड डू व्हाट इज राइट, जिससे सफरिंग मिनिमाइज हो। ऑल्सो सर हम बहुत लाइक ऐसे अपने घर के आसपास हमारी गलियों में बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स रहते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक द पीपल एट लार्ज कैन डू एट देयर ओन लेवल टू लाइक इम्प्रूव देयर लाइफ? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बड़ा जो एक बेसिक सी चीज है वो तो ये है कि आप अपने घर के बाहर एक मिट्टी का कटोरा रख दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए,
ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, आप सुबह शाम घर आते जाते पानी भर दीजिए, क्योंकि उनको पानी की तकलीफ रहती है खासकर गर्मियों में। फिर अगर आप अपने घर के बाहर एक डोर मैट रख देते हैं या बोरी रख देते हैं, बोरी पे तो हो सकता है लोग बाग ऑब्जेक्ट करें, आप डोर मैट रख दीजिए मोटा सा, तो उसमें ये है कि सर्दियों में खासकर कुत्तों को सोने की एक जगह मिल जाती है। तो ये एक सेकेंड, ओह चिली आज इधर से आजा। ओके सॉरी, चिली वांटेड टू जॉइन द लाइव। तो Can I see him? कैन आई सी हिम, ये तारे हिलाएगा सारी, एक सेकेंड इधर आ चिली। Okay. It's okay, sir. या इज गोना लाइक यू नो, ये सब का सारी कॉन्फ़िगरेशन हिलाएगा, ट्राइपॉड घेरेगा मूर्ख। तो It's okay. सॉरी मैं बात करता, हाँ तो पायदान रख सकते हैं लोग, पायदान रख सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फीड करना। आप फीड करने में अगर आपको डर लगता है तो जो फीडर्स हैं आप उनकी सपोर्ट में तो आ ही सकते हैं, क्योंकि देखिए 2% लोग फीड करते हैं, 5% लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, पर इसके अलावा 93% लोग जो हैं वो न्यूट्रल हैं। उन न्यूट्रल लोगों को चाहिए कि ये फीडर्स की सपोर्ट में आए, है ना, क्योंकि इनजस्टिस, चाहे किसी भी प्रकार का इनजस्टिस टॉलरेट नहीं होना चाहिए। तो कोई हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है जानवरों का ध्यान रखना, तो अगर वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी कर रहा है, आप नहीं कर सकते, तो आप उनके सपोर्ट में तो देखिए आ ही सकते हैं। फिर इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप्स हैं कि भाई आप अपने किसी लोकल शेल्टर में जाके वॉलंटियर कर सकते हैं। आप वॉलंटियर करेंगे तो आप उसके बाद फर्स्ट एड सीख सकते हैं। तो आपको कोई छोटा मोटा वुंड दिखता है, 60-70% ट्रीटमेंट्स आप सड़क पे कर सकते हैं अगर आप किसी कुत्ते से रोज मिलते हैं। तो आपको बस ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बीटाडीन चाहिए, कॉटन चाहिए, है ना, और अगर तो इस तरह आप थोड़े केसेस हैंडल कर सकते हैं। बेसिक वुंड को आपने शुरू में ट्रीट कर दिया, वो मैगेट वुंड में तब्दील ही नहीं होगा। इसके अलावा आप किसी को अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर अडॉप्ट नहीं, फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि भाई आप किसी एक डॉग को पकड़ के स्टेरलाइज करा सकते हैं। आपने एक स्टेरलाइजेशन कराई, आपने हजारों जिंदगियां बचा दी। अब होता गया है कि रेस्क्यूज में ध्यान ज्यादा चला जाता है हमारा, बिकॉज लाइक वो अर्जेंट लगता है, इस डॉग का पैर टूटा हुआ है, इसको मदद की जरूरत है। सारी एनर्जी हमारी उसमें लग जाती है, स्टेरलाइजेशन पीछे छूट जाती है। मैं किसी और को क्या कहूं, मैं खुद ऐसा हूं, पर स्टेरलाइजेशंस आर मोर इम्पोर्टेंट और वो हमें करनी चाहिए। एक सेकंड सर, you want to come so then they can start asking more animal questions, like just take a seat, take a floor, chill। ये गया, ये मुझे पता था चिली ने ये करना है। आइए तुम आ जाओ यार, पहले आओ भाई, मेकअप योर माइंड चिली यार, आना है तो आ। Okay, now the other one wants in, sorry just a second। Okay, yeah, but you don't have to be in right now। Hey buddy, okay, ये स्पॉट है, ये हमारा सबसे पहला रेस्क्यू था। ये बंदर दिल्ली से ही है, शक्ल दिखा दे अपनी, गुर्रा मत। So cute। ओके ठीक है, और आप बताइए। हाँ सर, ऑल्सो ये चीज थी कि अगर लाइक किसी इंडिविजुअल को ये ओपन करना हो ऐसा समथिंग लाइक पीपल फार्म, तो उसका क्या प्रोसीजर है सर? लाइक गवर्नमेंट वो है कुछ फॉर्मेलिटीज? देखिए आपको शुरू करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई बड़ा कुछ पेचीदा कुछ करना पड़ता है। शुरू तो आप खुद ही कर सकते हैं। Okay। एक सेकेंड, हाँ सॉरी स्पॉट रो रहा था, कैमरे पे नहीं था। तो शुरू तो आप इसका कर सकते हैं कि आपने एक बीटाडीन की बॉटल ले ली, आपने कॉटन रख लिया और आपने खुद ट्रीटमेंट शुरू कर दिए। आपके प्लान पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा होना चाहते हैं। ठीक है, तब आपने मान लीजिए एक कमरा है जिसमें आप कुछ एक डॉग्स आपने रखे हैं। बेसिक चीजें, आपको हाइजीन का ध्यान रखना होगा, आपको नॉइस लेवल का ध्यान रखना होगा कि आस पड़ोस वाले कंप्लेन ना करें। ठीक है, जैसे ही आपका काम थोड़ा बढ़ जाता है तो जो एक चीज है, आपको किसी बायो हैजर्ड कंपनी से लिंक करना पड़ेगा जो आपका सारा बायो वेस्ट उठा ले। तो आपको कोई भी अस्पताल वाला बता देगा कि आपके एरिया में कौन सी बायो हैजर्ड कंपनी है, कि आपको अपना वेस्ट सेग्रीगेट करना होता है, भाई कॉटन अलग, सिरिंजेस अलग, फलाना फलाना, वो आपको बता देंगे। तो एक तो लीगल फॉर्मेलिटी ये है। अगर
आपने डोनेशन लेनी है, बेस्ट है आप अपने प्राइवेट नाम पे ना लेके एक ट्रस्ट फॉर्म कर लें, उसमें आपकी कोई भी सीए हेल्प कर देगा, 4-5 हज़ार रुपए का खर्चा है सारा, वो आपके लिए एक ट्रस्ट बनवा देंगे। फिर उसी ट्रस्ट को आप उसके लिए एटीजी और 12 अप्लाई कर देंगे तो आपको वो इनकम टैक्स वाली रिबेट मिल जाएगी। कुछ लोग आपको डोनेट इसलिए भी करना चाहेंगे कि चलो उनको साल के एंड में एक रिबेट मिल जाएगी, आपको डोनेशन मिल जाएगी, तो दोनों का पर्पस सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा अगर आप अपना ट्रस्ट जो है नीति आयोग में रजिस्टर करा लेते हैं तो फिर आप सीएसआर फंड्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा हाँ, अगर डिपेंड करता है आप कहाँ पे हैं, मुझे नहीं पता, अगर आप म्यूनिसिपैलिटी एरिया में हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर जैसे आप गांव एरिया में हैं तो आपको शायद पंचायत से एनओसी लेनी पड़ेगी रजिस्टर कराने के लिए अपना ट्रस्ट जो है, और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से। वो वैसे भी बेहतर है कि आप अपने लोकल वेटनरी डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, इन सबसे संपर्क में रहें, और उनके पास कुछ स्कीम्स आती रहती हैं कई बारी, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज की वैक्सीनेशन आ गई, जस्ट एक नो हाउ बना रहता है, आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। और डिपेंडिंग अगेन आप कहाँ पे हो सकता है आप अपनी म्यूनिसिपैलिटी से बात करके आपको वो मिल जाए पर डॉग स्टरलाइजेशन के पैसे। अच्छा, ओके। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मेरी जो प्रशासन है उनसे टर्म्स अच्छे रहे, हम उनकी मदद कर पाए, हमें जो परमिशन चाहिए वो दे दें, पर मैं सरकारी सहायता में इतना विश्वास नहीं रखता, बिकॉज देखिए जहां पे भी आप सरकार से सहायता लेंगे देयर विल बी स्ट्रिंग्स अटैच्ड। राइट। वो आप इंडिविजुअल डोनर्स का भी ध्यान रखिएगा, उनको इंडिविजुअल डोनर्स को भी क्लियर कर दीजिएगा कि आप डोनेट कर रहे हैं, थैंक यू, आप काम के लिए डोनेट करें, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको पूरी तरह से अप्रिशिएट करते हैं, पर प्लीज दैट डजंट मीन दैट यू कैन इन्फ्लुएंस आवर डिसीजंस। वो एक्सपेक्टेशन सेट करनी बहुत जरूरी है। डू यू माइंड? ओके। So how many animals have you rescued like so far? How many animals are there? I think we have done close to 2000, because last time we checked it was 1500, and then we have done more, so it's between 1500 and 2000 animals that we have rescued. And इसके अलावा अगर आपके एनिमल वेलफेयर वाले क्वेश्चंस हैं सारे, तो जो वुड बी अ बेटर पर्सन टू आंसर देम। ठीक है? Okay. Okay, so I'm gonna hand it over to her. I think the pictures are ready. Prabal is ready with the pictures. You can see. It's good that I'm not here for the pictures because that's just gonna embarrass me. तो मैं जो को हैंड ओवर कर देता हूँ। हाँ जी, एक सेकंड। Nobody wants to interview me. I'm just a dog. Well, yeah, I've gone to school. Okay. All right. Let's see. Peace. See ya. Okay. Wait. Move it, skirt. Come on, bud. There we go. Jeez. Should I? Oh. Oh, hey, it's me. Hi, Pam. Oh. Hello. Hi. I would like to give a brief introduction of Jo Ma'am to our viewers. Ms. Joellen is a co-founder at Peepal Farm with her areas of responsibilities including animal welfare management, head of medical, adoption promotion, and counseling. So, hi, ma'am. We welcome you. Hi. That's good to be here. How are you doing? Good. A little hot and busy, as always. Yeah, I really are. Okay, just a minute, ma'am. So we have this question from a viewer that how can we help animals to take them out of all the misery they are suffering during pandemic with all the due precautions against spread of COVID-19 from animals and vice versa? Well,
So there's a couple different parts. There's the how to help animals, and then there's the how to keep yourself safe as well while you're doing that. So with helping animals, I think right now, because most of the shops are closed, restaurants are closed, there's not Yeah. as many people out on the street, animals are in need of food very badly. It's a little tricky to do sterilizations right now. That's usually my go-to, is say just like do as many sterilizations as you can. But since veterinarians aren't available, I think feeding is super important right now, just getting out and making sure that they have access to food and clean water. And I know that that means that our feeders are having to go out onto the streets, which puts the feeders at risk as well. But there's some basic precautions that we can all take just in general to protect ourselves against COVID. And wearing a mask is a big one, just like making sure that you have a mask on when you go out. Social distancing. So if people are approaching you on the street, it's sometimes a little bit difficult because it can be embarrassing, but saying like, hey, I'd like to keep some space, like let's just stay 6 feet, let's stay 10 feet apart, and then we can have a conversation like that, but just 10 feet. And then in terms of the handling of the animals, I think that we're still slightly inconclusive as to whether dogs can actually carry coronavirus. The WHO has said like there's a possibility of that, but there's not been enough studies to really know for sure. So we're working off of like instances, stories, hearsay. So there's no real definitive evidence. But to err on the side of caution, obviously like feeding, and when you pick up the bowls, not touching your face, don't never take the mask off while you're out, and no like taking it off and on and off and on, because that actually puts yourself at worse risk than if you just didn't wear a mask. So avoid touching your face, don't mess with your mask. Come home, wash the dishes, use tons of soap on your hands, do a good, like, the way that the government has showed us all how to wash our hands, and use plenty of soap, and you should stay safe. So as long as we're all following the proper procedures of social distancing and washing hands, it shouldn't be an issue. Okay. Right. Mm-hmm. So, ma'am, amid this pandemic situation, what are the major challenges that you faced in rescuing animals and also treating them? Like, what are the major challenges? Primarily just availability of resources. So whether that's veterinarians, like our veterinarian has chronic lung problems, so he has to stay completely quarantined, so he's out. A lot of the veterinarians in this area have said like, no, I'm not doing anything. So it's there's not much availability of doctors right now, but there are doctors and government vets and everything that are taking appointments. So I would encourage everybody, if you do have a rescue, call in and take an appointment. So that way you can space out and not be when there's a bunch of people at the vet's office, but you can still get the animals seen. And then also just availability of medical supplies. Things are coming much slower now. So gloves, masks, cleaning stuff like Savlon and betadine and things like that. They're harder to come by, and it's a slower process to get a hold of them. So I think the rescues are facing a bit of a shortage of medical supplies at this point. Oh, and also for us, because we have adoptions outside of our area, transporting dogs to their homes has been very tricky. We've had to put a complete stop, and we're just now getting to the point where we're like looking at options in order to send dogs to their homes. So that's been kind of tricky as well. So I think we're done. Like, do we have any questions from the viewers? Nope. Oh, Chili wants to say hi now. Hello. Hi. Hey, thank you. hi. This is Chili Dog. What's his name? This is Chili Dog. I rescued Chili. him in Delhi as well. And he was abandoned outside of my apartment as a little puppy. So. Okay. Ma'am, so there's a question from Anuradha Mathur. She says that how to make friends with aggressive dogs and also monkeys. That's really tricky. So I guess I'll start with monkeys, because monkeys are an unusual kind of situation in India. The macaque monkeys are the most common ones we see, the ones with the short tails, the normal brown monkey you see, and they're actually a wild animal. So I would not encourage anybody to
feed monkeys that have access to forest areas or water. Within the city, it's a bit different because they're scavengers, right? They're like, you know, they're going through and they're going into garbage and they're getting water wherever. So leaving a bowl out for monkeys, and you can leave food, but never hand feed the monkeys. They're wild animals. They shouldn't be treated like domesticated animals like dogs or cats. They should maintain somewhat of a fear of people in order to live their best lives and have like happy, healthy lives as monkeys will. Dogs, on the other hand, and cats are very, very different. They're domesticated animals. They were bred to be companions for people and to do jobs for people, like when they're, you know, when they're herding or protecting livestock or things like that. And they were domesticated in order to protect villages and homes. So they have a more strong bond with us, and they really thrive with a human bond. So with an aggressive dog, obviously we always want to be safe. The key is never push it further than you think you should. Never just try to push it and say, oh, he'll never bite, and then, you know, you end up bit, because it can be quite dangerous. So just go very, very slow and be very patient. With most dogs, food is the key. So pick something that they really enjoy eating, some treat that they really like. And if they won't approach you at first, just throw it to them, just slowly, you know, little by little, or set a bowl down and take a few steps back. I prefer to do small treats and just toss them. And then as the dog gains trust, they'll start to approach closer and closer. And this is over weeks of doing this. Every day you go out and you just throw, and then you throw a little less far, and then you throw a little less far, and slowly, slowly they get adjusted to being around you. It's very difficult with a stray dog because you don't have any control over their environment. With a stray dog, they are exposed to people who maybe are not friendly. They're exposed to all sorts of different dogs. They're exposed to all of these things that you can't control. So getting to be training with a stray dog is another, it's very, very difficult. It has another level of difficulty to it, but it is possible. And especially to make friends with them. Yeah, just that very slowly encouraging them to come closer and closer. And then, you know, if they're eating off the floor right next to you, try getting them to take from the hand. And then, you know, you can slowly build up from there. With a pet dog, it's a lot easier because you have control over their environment and you can give them only positive experiences with people. So both from you, and then if you have a dog that's fearful with other people, you can ask like your friends and family who come over, hey, when you come in, give him these treats. And like, you know, throw these treats to him and start to build a positive interaction with other people as well. Okay. So food. Short answer, food. So what food should we feed? Like what do they prefer eating? It's really different for each dog. So like a lot of them do enjoy like non-veg, which we don't encourage people to go out and buy a whole bunch of non-veg. But you can get like waste scrap from butchers. So there's like the butchers that are slaughtering chickens. They have waste meat that you can clean very thoroughly, and they would otherwise just throw it away. So you wash that very thoroughly, boil it, and then you can give that to dogs, as long as there are no bones in it. That's also very important. Don't feed cooked bones to your dogs. So always just the meat part. And you know, like that's a good place to start if you have a dog that's a little pickier. My dogs eat anything. We feed bananas to our dogs. They really love them. So some like very sweet bananas, not the green ones, but the really sweet ones. They really enjoy those. So try bananas. That always works too. Ma'am, there's a question from Shubham Gupta. Ma'am, how was your journey in India so far? Well, it's been very different at different points. I've been in India for 7 years now. So when I don't know if Robin talked about his time in Auroville at all, but that's when I first came to India, is when we were doing that project in Auroville. So that was very different than the experience after that, which was working in Delhi with spay and neuter. So living in Delhi for a year, doing simply spay and neuter for stray dogs. And then moving up here a year later, and then this project has been quite different. So it's been a lot of work, but it's been very rewarding. And I've learned a lot in the last 7 years.
I feel like I've become a very different person than I was when I started. Nice. Right? Is there any other? Ma'am, how do we treat dogs who are suffering from mange disease? Mange, yeah. So mange is a mite. It's like a little bug that burrows into the skin. And you'll see the dogs that have the like flaky skin and losing lots of fur and they're very itchy. Usually that's mange. It's not always mange. So it's important that those dogs see a veterinarian who can properly diagnose it. They can do what you call a skin scrape, where they take like a blade. They don't cut the dog, but they kind of scrape it along the skin and take a skin sort of top layer sample. And they can see if there are mites in that layer. If there are mites, there's a series of injections. Ivermectin is the most common drug, but it can be very dangerous. So it's really important to work with your veterinarian when you're giving ivermectin. It's not something that you want to just like give them tablets. Oh my goodness, there was something that flew on me. You don't want to just give ivermectin tablets just. You need to work with a veterinarian about dosage and be very careful about that. But there are some things that if it's a mild case of mange, you might not need injections. And you can use like medicated baths. So there's several different kind of medicated baths. Pet Ben is a great shampoo, Cleaner Pet. And if there's bacterial infections or fungal infections, ketoconazole is an antifungal that's really effective. So there's a bunch of different medications. Again, this usually is easier if you work with a veterinarian, just because they'll know the treatment history. They'll be able to follow what you've been giving and make changes accordingly to what kind of symptoms they're seeing. So it's a little hard for me to give medical advice over a live chat, just because it's different with each case. But if you want to supplement what your veterinarian is doing, you can add coconut oil into the food. That's actually very helpful for the skin. It's really good to hydrate their skin, making sure they have plenty of water. Multivitamins like ZipFit, anything like Multistar, any multivitamin for dogs, that can really help them because it kind of boosts their health and they are able to fight the mange mite better. I hope that answered the question. Ma'am, if anybody wants to intern in Peepal Farms, what is the procedure? So we haven't for internships. Yeah. Yeah, we haven't really had like a procedure for internships. We have several different ways that people have joined on. Right now it's a little tricky because of coronavirus, so we're not taking all new people into the farm. So we have some e-volunteering, some people who are doing volunteering online. But going forward, if we're able to open back up again, we do like guest volunteers. So that's people who are coming and staying in the farm stay and volunteering as they, as they have time for and want to. There's work exchange, which is a hourly commitment. So they commit to 6 hours and they have to come in for a specific role for work exchange. And then there's like paid positions as well, which is even more level where like people are taking a full salary and they're here as their full-time job. All of this is on our website at peoplefarm.org/join. It shows the different kind of ways that people can join in. Sure, ma'am. Are we done? Any other questions? Okay. Oh, wow. Any memory, ma'am, that you wish to share with us related to these pictures and stuff? Oh, no, I think a lot of these are just pictures of me with my dogs. That's Chilean Spot. Mostly pictures of me are always with animals. I don't take pictures unless there's an animal in it. But yeah, I mean, it's been wonderful here. And I think that, I mean, since this live video is specifically talking about coronavirus, I know how isolating this can be for especially feeders, because you don't have your normal support system anyway. And then I think feeders often feel very isolated, even when it's not coronavirus. Like we feel like there's no one else doing this, when in fact there are actually many other people.
So I would just like to remind people that there are others out there doing this work, and you're not alone. And Yeah. it's really important, I think even more important in this time, to find like-minded people, to find a community of people. So if feeders who can get online, can get on Facebook and join in with these kind of communities. Like, I mean, our community is Friends of Peepal Farm. That's a great community where people post kind of the work that they're doing, and they show the rescues and the feeding that they're doing. So I think joining groups like that is really important to keep our morale up, you know, so that we don't get disheartened and feel like, oh, I'm the only one, I'm all alone. And you can ask for support from people that way. So just want to like let everyone out there who's doing animal work know that you're not by yourself, that we're all here and we're all working and pulling in the same direction. So I think that's all, ma'am. What is your feedback about DASF and also this webinar? I had a great time. I know I came in right there at the end, but it's good questions. People have been asking good questions. So thank you for having us on. Yeah. It's good. Thank you, ma'am, for joining us.